Hello guys and welcome in yet another video of Spirit Education. In this video today we are going to discuss about vodka. So first of all we'll start with what is vodka. So we see the definition of vodka. Vodka is a clear spirit which has been distilled multiple times and filtered before bottling and unaged. तो ये जो आप अंडरलाइन वर्ड्स देख रहे हैं दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच मेक इट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर स्पिरिट. इट इज़ अ क्लियर स्पिरिट ऑफ कोर्स. डिस्टिलेशन मल्टीपल टाइम, कई बार इसकी डिस्टिलेशन हुई है यूजिंग प्रेफरेबली patent distill method, which is a continuous method, and multiple time distillation happens. So what happens in the distillation, it makes it very pure kind of spirit which does not have any aroma of the रॉ मटेरियल किससे बनाया है उसका कोई भी इतना ज्यादा इसके अंदर अरोमा नहीं रह जाता है मल्टीपल डिस्टिलेशन से. नेक्स्ट इज फिल्टर्ड. इसको आगे फिल्टर भी किया जाता है जिससे कि इसके अंदर कोई भी कलर ट्रेस या फिर कोई भी कंजीनर टेस्ट जो इम्प्योरिटी है वो रह गई हो तो वो रिमूव हो जाती है. अलग अलग टाइप के फिल्टर्स इसके अंदर यूज करते हैं इसको प्योर स्पिरिट बनाने के लिए. बेसिकली द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक इट वेरी प्योर अनफ्लेवर्ड, जिसके अंदर कोई फ्लेवर ना हो, कोई टेस्ट ना हो. इस टाइप का एक प्योर स्पिरिट बनाने की इसकी ऑब्जेक्टिव है. दैट इज व्हाई इट इज मेड एंड इट इज अनएज्ड. ऑफ कोर्स अगर आप एज करते हैं तो एज से उसके अंदर कलर आ जाएगा और अरोमा आ जाएगा विच वी डोंट नीड इन vodka. Okay, so history of vodka. Let's talk about history of vodka. History of vodka is connected to three different places. Around the same time in 14th and 15th century, it was originated in three different places: Russia, Poland, and Sweden. So that is why we see different three varieties of vodka. One is Russian vodka, Polish vodka, and Swedish vodka. सो इन रशिया देख लेते हैं 14 सेंचुरी में ग्रेप से उन्होंने सबसे पहले वोडका बनाना शुरू किया. ग्रेप वाज बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग वाइन एट दैट टाइम एंड वाइन वाज वेरी फेमस दैट टाइम, सो दे कॉल्ड इट स्पिरिट वाइन आल्सो. Later on, Isidore the monk, he was a monk and he created a recipe of vodka and it was made with grains. इसीलिए उसको ब्रेड वाइन भी बोला गया because it used to smell like a brain, not brain, bread. Next is Polish vodka around the same time, same like Russian vodka around 1400s. In 14th century, they also had a spirit which is known as vodka. Earlier, they were using it for medicinal purpose. But later on, the writers they discovered that it is good for intimacy and all. Then it got famous, and later on, it was adopted as a social drink. बाद में उसको सोशल ड्रिंक की तरह भी अडॉप्ट किया गया. स्वीडन में देख लेते हैं. इनका वोड का प्रोडक्शन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है 1500 में और पूरी तरह से जो एक्सपेंड हुआ है दैट इज 1800s में. ये ज़्यादा इसका प्रोडक्शन एक्सपेंड हुआ है. इन्होंने जो वोडका बनाना शुरू किया था दे मेड विद पोटैटोज. ओके, और पोटैटो बहुत फेमस है वोडका का. अगर हम पूछते हैं व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर वोडका, यूजुअली स्टूडेंट्स से दैट इट इज मेड ऑफ पोटैटो. But surprisingly, it is not potato now, it is grains. So most of the vodka is made with grains now. Absolute vodka is the vodka which is very old and it is made in Sweden. It is the Swedish vodka. 1979 से इसका प्रोडक्शन हो रहा है और आज तक ये सेम प्लेस के ऊपर इसका प्रोडक्शन करते हैं. दैट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉकटेल्स. वोडका बेल्ट कंट्रीज, तो ये वो कंट्रीज हैं दोज विच आर प्रोड्यूसिंग वोडका एक्सटेंसिवली एंड ड्रिंकिंग ऑल्सो. तो ये जो कंट्रीज है हम देख सकते हैं सच एज रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, स्लोवाकिया. ऑल दीज कंट्रीज आर हियर स्टार्टिंग फ्रॉम द रशिया एंड गोइंग अप टू यूरोप, some part of Iceland and all. So these are the countries which are producing vodka extensively and they are also uh, drinking vodka. So these are the famous for vodka production and consumption. Same like France is famous for the wine production and consumption. What is vodka made of? तो बात कर लेते हैं what is the raw material for making a vodka. So vodka may be distilled from any starch or sugar rich plant. Any plant which has sugar readily available to ferment or any grain or vegetable which has starch which can be converted into fermentable sugar, वो हम लोग यूज कर सकते हैं वोडका प्रोडक्शन के लिए. So most of the vodka today is produced from the grains such as corn, rye or wheat. But some vodkas are made from potatoes, molasses, grapes, rice, sugar, beets, and milk, even milk also. So this is the molasses. Molasses is the leftover
बाय प्रोडक्ट आफ्टर मेकिंग द शुगर, तो जितनी भी सच एज इंडियन, अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। ओके, एंड शुगर मिल्स के अंदर काफ़ी सारा ये शुगर का जो मोलेसिस है वो बचता है, बाय प्रोडक्ट बचता है, जिसको फर्मेंट करके ये लोग अल्कोहल बनाते हैं। तो एंड ग्रेप्स, कंट्री जिस कंट्रीज के अंदर ग्रेप्स अबेंडेंस में अवेलेबल है, राइस और ग्रेन्स एंड शुगर बीट्स, फॉर एग्जांपल इन यूएस sugar beets is used for making this, and milk also. Black Cow Vodka. It is a brand of vodka manufactured in West Dorset, United Kingdom. So United Kingdom में जेसन बार्बर एक डेयरी फार्मर थे जो बहुत सारा चीज प्रोडक्शन करते थे। पहले इनका चीज आता था, तो दे यूज टू हैव अ लॉट ऑफ रॉ मटेरियल, सॉरी बाय प्रोडक्ट, वे। तो वे जो मट्ठा होता है, तो इन्होंने क्या किया, इस वे के अंदर इन्होंने एक ऐसा ईस्ट का स्ट्रेन डाला, टोरुला क्रेमोरिस, जिससे कि ये डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकें लैक्टोज को इथेनॉल में। तो इन दिस प्रोसेस ही वाज एबल टू मेक अ वोडका विद दिस। नाउ प्रोडक्शन ऑफ वोडका। सो प्रोडक्शन ऑफ वोडका हमने बात करी है, फ्रूट से हम बना सकते हैं। फ्रूट के अंदर शुगर रेडीली अवेलेबल होता है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय द हेल्प ऑफ यीस्ट। स्टार्ची वेजिटेबल में स्टार्च को कन्वर्ट कर सकते हैं शुगर में, एंड फर्दर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। ग्रेन इज द सेम प्रोसेस, माल्टिंग प्रोसेस से इसके अंदर एंजाइम्स इसको कन्वर्ट करते हैं स्टार्च को फर्मेंटेबल शुगर के अंदर। एंड देन वी हैव मिल्क। मिल्क की हमने बात करी थी, जैसे कि ब्लैक काउ वोडका है, टोरुला सिरमोरिस इज द स्ट्रेन ऑफ द यीस्ट जो फर्मेंट करती है लैक्टोज को इथेनॉल में। तो ये सारे एक लंबी रेंज आ जाती है जब हम वोडका प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो रॉ मटेरियल्स की। तो इट इज नॉट ओनली पोटैटो, अर्लियर इट वाज मेड बाय पोटैटो, बट नाउ मोस्टली वोडका इज मेड बाय द ग्रेन्स। अब बात कर लेते हैं डिस्टिलेशन की। वोडका इज एक्सटेंसिवली डिस्टिल, काफी ज्यादा डिस्टिलेशन करते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट एनी flavor or any aroma or taste of the raw material, whether it is made of fruit, or it is made of grain, or it is made of any other raw material. We should get a very pure kind of ethanol, which will be diluted later on and filtered. तो कंटिन्यूस स्टिल से इसकी हम बार बार डिस्टिलेशन करते हैं, और इसको 96% तक हाई प्रूफ बना देते हैं, जो प्योर इथेनॉल बन जाती है। और बाद में इसको हम रिड्यूस करते हैं प्योर वाटर मिलाकर। ठीक है, दैट इज वाई वाटर का काफी इसके अंदर रोल होता है वोडका के टेस्ट को अल्टर करने के अंदर। द यूरोपियन यूनियन हैज एस्टेब्लिश्ड अ मिनिमम अल्कोहल कंटेंट ऑफ 37.5%। तो यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि भैया वोडका के अंदर आपका 37.5% मिनिमम अल्कोहल होना चाहिए। और यूएस की अगर हम बात करें, वहां पे एज पर रूल इट शुड बी minimum 40% alcohol content in the vodka. Now next is filtration. First of all, why filtration? Why we are talking about filtration at first place? So filtration impact the texture of vodka. As long as vodka is to be used in the cocktails and mixed with mixers, it does not matter. But when you have to drink neat, it matters. It makes it smooth. So we have a long list of vodkas which have different type of used, like no filters. Some vodka has not used the filtration process, like Belvedere. It is a rye vodka which is unfiltered vodka. Then we have micron paper filter, quartz crystals. These are also called diamond filter, lava rock bed. So the rocks which are taken from the volcanic eruption, and coconut carbon. So coconut after burning we get the carbon, and charcoal, activated charcoal, which is used for the extensively used for the vodka filtration. So next process is the dilution. Then we will do the dilution. We will dilute it with some water. Okay, as compared to other spirits like whiskey or gin or rum, water plays a prominent role in vodka. The water chosen to dilute vodka will determine quality and characteristics of the final product, because it is 60% water. In a bottle of vodka, 60% is water. So of course the taste of the vodka will be impacted by the water used. So there is a long range of vodka which claims to use all different sort of water, such as if we talk about X Muse, it is a vodka uses water drawn from the aquifer Scottish water.
It is a Scottish water purified underground and exhaled above ground. Then next we have Ocean Organic Vodka, claimed to be the only vodka made with deep ocean mineral water. The high mineral content impact unique characteristics of this vodka. तो मिनरल्स का जो एक टेस्ट है इस वोडका के अंदर, वो ये क्लेम करते हैं दैट यू गेट द डीप ओशियन मिनरलिटी इन द वोडका. Then there is a Finlandia uses water that is drawn from a deep well that lies under a 10,000 year old glacial moraine formation in the Rajamaki, Finlandia. Water is so pure that no other filtration is required beside a mechanical filter only removes visible particles. Then there is a heavy water vodka is using water from underground lake that was originated from the last ice age, which that is thousands of years ago. Then Belvedere is there, has two artisanal walls. उनके अपने wells हैं, not walls, wells. कुएं हैं within 1 mile of the distillery where the vodka is made. The water passes through two-step purification system to ensure it is pure and tasteless. तो ये सिर्फ एक filtration यूज करते हैं. Next is Grey Goose. It is very famous vodka. Gets its water from 500 feet well in Grande Champagne region of Cognac. Cognac फ्रांस का जो रीजन है जिसके अंदर कॉन्यक बनती है, उसी के ग्रांड चैंपेन काफ़ी प्रोमिनेंट एरिया है. इट्स बीन फिल्टर्ड थ्रू लाइमस्टोन ओवर सेवरल सेंचुरीज एंड ड्रॉन while bottling. तो फ्रांस की लाइमस्टोन सॉइल इज वेरी फेमस, so this is filtered from that limestone. Then we have Absolute is focused on the idea of one source. All the water for wheat production and dilution comes from the same area of the distillery in Aarhus, Sweden. स्वीडन के अंदर ही ये लोग एक ही जगह पर जितना भी जो वीट की इरिगेशन है या फिर इसके अंदर एडिशन बिलो एक वोडका है विच यूजेस वाटर फ्रॉम डीप बीनीथ वोल्केनिक प्लेट्यू इन द सेंटर ऑफ द न्यूजीलैंड नॉर्थ आइलैंड. So this is a vodka that is 42 below. So that is about all about the vodka production. Now, summary, we can see that we have seen the definition. The definition of vodka, it is a clear spirit which has been distilled extensively. Distillation काफ़ी हुआ है continuous still method से, और इसके बाद में इसको जो है हमने फिल्टर किया है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है इसके अंदर, एंड अनएज्ड है. ओरिजिन वोडका ओरिजिन हमने देखा था रशियन, स्वीडन एंड पॉलिश, थ्री ओरिजिनेशन है इसकी जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है. प्रोडक्शन के अंदर हमने देखा है द रॉ मटेरियल कैन बी एनी फ्रूट, वेजिटेबल और स्टार्च और इवन मिल्क. इट कैन बी प्रोड्यूस, सो देर इज नो एनी स्पेशल ingredient फॉर रॉ मटेरियल. डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन हमने देखा है कि कंटिन्यूस स्टिल मेथड से बार बार डिस्टिलेशन हुआ है. देन फिल्ट्रेशन, अलग अलग टाइप के हम इसके अंदर फिल्टर यूज करते हैं, कोकोनट कार्बन या एक्टिवेटेड चारकोल या क्वार्ट्ज क्रिस्टल जिसको डायमंड फिल्टर भी बोलते हैं. एंड देन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के लिए वाटर के ऊपर ये काफ़ी ध्यान देते हैं कि इसका जो वाटर है दैट इज सोर्स्ड फ्रॉम अ वेरी प्योर काइंड ऑफ origin. So thank you so much for listening. If you still have any question in mind, you can write in the comment below. Thank you so much.